Right, बच्चे लोग. So we are starting up with a new chapter, chapter 5, arithmetic progression. Arithmetic progression. Can anyone tell me any idea on what is AP? Just checking your IQ, not मैम किसी पैटर्न का nth टर्म निकालना। arithmetic progression क्या है? अच्छा What is मैम, मेरे को arithmetic नहीं पता मैम। progression? हम Arithmetic, mathematically progressing. right, absolutely right. Arithmetic means plus minus करना कुछ. तो प्लस करके कोई एक प्रोग्रेशन आ रहा हो, माइनस करके कोई एक प्रोग्रेशन आ रहा हो, दैट इज एपी. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर मैं एक नंबर लेती हूँ वन, अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ वन, इफ आई एड वन टू इट प्लस वन, इट विल बी टू. इफ आई एड वन मोर टू it will be three. If I add one more to it will be four. 4 If I add one more to 5 it will be five. So on adding the same common term to the previous number, you are getting another term. This is called arithmetic progression. Whenever the same thing you're adding or subtracting and you're getting consecutive terms, that is called as an AP, arithmetic progression. Okay. Like if I'm having 5, now to that I'm adding 5. That is 10. Now to that if I add 5 again, that is 20. So what is this now? 5, 10, 15, 20 and so on. This is an arithmetic progression. Right, bache? To present it in a model, let us understand it like if I have one matchbox, right? In the next thing, I'm having the same matchbox again with two more matchboxes. Now with the same set of three matchboxes, you have two more. Now with the same set given here, 5 matchboxes ka, usme when you add two more, like this is the 5 matchboxes ka set you had earlier. In this, when you have two more, this kind of progression is AP. Like the earlier one is already there. It is already there. This one. You had something extra. Now this 3, you already had. Adding 2 extra to it. Now these 5, you already have. Adding 2 more extra to it. Understood or not? What is an AP? Clear with this thing or not? So whatever you had previously, in the same thing, you're adding something again and again. And that adding of something should be uniform, should be common. Plus 2, plus 2, plus 2. If you are adding or subtracting the same thing, the consecutive terms that you are having is called an AP. So what is the characteristic that I'm telling you again and again here? That difference, common difference should be there. That means there should be a difference of 2 here, 2 here, and 2 here. The difference between the consecutive terms should be common. That is one mandatory condition for an AP. Understood, bache log or not? Right? Whenever I ask you if this number 3579 is this an AP or not, you'll check for the difference in their consecutive terms. This is plus 2, plus 2, plus 2. Yes, this is an AP. Understood or not, bache? Clear or not, everyone? Clear, no? Okay. Now, in this chapter, let us get started with the exercise only, okay? Why exercise? Because there's nothing much to explain now. We can do it side by side. So if you have, Ma'am, so
Ma'am, so in the progressions, it can only be the sums or differences, not products or. हो सकता है. Those are called geometric progressions. वो कुछ 11. अलग है. वो बाद में आएगा. उसके बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे. ओके वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है. हम बात करें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की. ओके exercise 5.1 we are starting with. When they ask you in which of the following situations does the list of the numbers involved making an AP, why you have to check. First of all, make the sequence. You have to then check if you are adding or subtracting the same thing. If you're adding and subtracting the same thing, that means those numbers are making up an AP. Okay, if I write 1 comma 1 comma 1 comma 1, is this an AP? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're You adding know zero. Why? Yes. We are adding 0 again and again. The common difference should be the same. So that is adding 0 again and again. So that's an AP, right? Okay. Let's start with the first part. The taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 rupee for first kilometer and 8 for each additional kilometer. So for first kilometer you need to pay 15 rupee. That is for sure. Now for every next kilometer you are paying 8. Let's say we have traveled for one more kilometer. That will be 15 plus 8. Right or not, bache? So 15 plus 8 is what? 23. Right? Now plus 8 for next one more kilometer if you travel. So 23 plus 8 is 31. For next one more kilometer you'll add one more 8 to it. That will be 39. Every time you're adding the same term. Right or not? So is this an AP? Yes, it is. Yes, You ma'am. have the first term with you 15 and every time you're making the same difference there, you're adding a, that means this is an AP. How do we Clear or not, present it? everyone? Yes, bache? How do we present it? How do we present it? Yes, Like ma'am. you'll justify that the for every subsequent kilometer you are paying 8 extra to it. So the AP you got here from 15, 23, 31 and 39. Now to prove this an AP because difference is common in the consecutive terms. That's it. Yeah. Okay. Is this okay everyone or not? मैम स्टेप बाय स्टेप कुछ है क्या लिखना है इसका या फिर हम वर्ड में ही लिख सकते हैं? वर्ड में ही लिखना है. ओके मैम. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Let's see this. If I am telling you that this is what this cylinder is having right now in it. This is the gas. So first of all, you removed 1/4 of it. So you removed this now. This is no more there. Now this is not there. Now the remaining part is this red one. Now they are asking you to remove 1/4 of this part now. Of the remaining, they have told you, no? 1/4 of the air remaining. Now this is the part remaining there. Now divided into 4 equal parts somehow. How can we do that? Tell me. Let it be like this. This is like one part of, and there are 3 parts of equal area. Somehow you're getting this. Now remove one more from it. So have you seen 1/4 of the remaining has reduced a little? Right or not? So earlier the 1/4 you removed was from the complete thing. So 1/4 was a bigger thing. Then once you have removed that part, the 1/4 of the remaining portion decreased. Now whatever you have, 1/4 may decrease further. Now 1/4 of the remaining would decrease further. Because the remaining part is decreasing, 1/4 of it is also decreasing every time. So every time you're subtracting a different thing from the previous one, right or not? Clear or not, everyone? So that means this is not an AP. Whenever you add or subtract
something from the, like, you're adding something of the remaining quantity, or Excuse me, ma'am. you're subtracting something of the remaining quantity, there, that is never an AP. Listen once again. If from the complete thing 1/4 is this much, Sachi, and you have removed that, would 1/4 of the remaining part be the same as the 1/4 earlier? For this now, if you want to make it 4 equal parts, these will be the parts, right? So now you're removing this part. See, beta, the black part that you removed is not the same as the red part that we are removing this time. The 1/4 is also decreased because that is the 1/4 of the remaining smaller part now you have. Understood or not, bache? Clear everyone or not? So because 1/4 every time is decreasing, because the remaining part is decreasing. Okay, let's take one example. 1/4 of 100 or 1/4 of 10. Are they both the same? They are different, right? No, ma'am. Or let me write it like 1/4 of 100 and 1/4 of 75. Are they the same? No, ma'am. They're different. So first of all, you removed 1/4 of 100, which is this black part. Then you removed 1/4 of 75, 3/4 that you have. So obviously 1/4 of 75 would be a smaller quantity. So you are now subtracting different values to get the next value. That means this is not an AP. Understood or not, bache? You need to explain that in words, beta. No mathematical equation is needed here. Ma'am, Because 1/4 of the remaining quantity is decreasing. That means the common difference is not constant. Hence, this is not an AP is what you need to write there. Understood or not? ma'am, can you please repeat? Since 1/4 of the remaining portion is decreasing every time because of the decreasing in remaining portion itself, that is why this is not an AP. Acha, okay. Okay, yes. Beta, dekho, 1/4 that you removed initially was 1/4 of the complete thing. So Yes, ma'am. that So was a it bigger thing. decreases when amount also decreases. Right. Now, since you have got only 75% of it left, uska 1/4 also would be smaller. It'll be different from the original one. Exactly. And one mandatory condition for the AP to be there, AP to exist, is that common difference should be the same. You just need to write that in words. Understood or not? Okay, ma'am. मैम इससे Kavish, do इतना you have WhatsApp logged in the device you are taking your class? Yes, mom. Would you set up? Log out for this. 1 minute. मैथ्स पढ़ते हुए जब चेहरे पे स्माइल आ जाए ना, समझो फ्रेंड का मैसेज आया व्हाट्सएप पे. मैम अगर नॉर्मली मैथ्स पढ़ते हुए स्माइल आया तो क्या कहते हो? स्माइल आए तो मैम नॉर्मल मैथ्स पढ़ते हुए स्माइल नहीं आ सकता मैथ्स इससे पढ़ते हुए कोई एपी समझता है कैसा स्माइल कर सकता हूँ? मैम जब मुझे तक तो मैंने कोई जोक क्रैक नहीं किया हो. अब मैंने जोक तो कोई क्रैक किया नहीं, या तो मैं कोई जोक क्रैक कर दूं, फिर तो आप ऑब्वियसली स्माइल कर सकते हो, है ना? मैम मैम इस चीज और को ये जो फ्रेंड्स के प्लान जब आते हैं ना, ये चल यार यहाँ चले, तो जो वो स्माइल आता है ना, इनर हैप्पीनेस दिखता है वो फेस पे बच्चों के. मैम मेरे को तो नहीं आता मैम, मैं जानता हूँ पहले से ही मम्मी मना कर देती है। चले Exhaustion. अभी, चले अभी. मैम आप ये चीज को वर्ड्स में एक बार लिख दोगे क्या? मेरे से लिखा नहीं जा रहा। अरे बेटू, छोटा बच्चा है. चल, क्या लिखूं इसमें? मुझे भी मैम लाइक सेंटेंस को 2 बार फ्रेम बोला मैंने पूरा स्कूल It is टीचर की an तरह. ऐसे arithmetic मैंने progression since I there is equal difference between the numbers. नहीं, that's not the way to write मैम it. मैंने तो वो लिख दिया, छोड़ो मैम। Okay. मैंने एक सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया उसको, उतना चलेगा ना? Since the remaining air in the cylinder, ये मेरे को ना, ये काम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. स्कूल टीचर की तरह मैं डेफिनेशंस और आंसर्स बोर्ड पे लिखूं. The remaining air in the cylinder is changing
So 1/4 of the remaining year would also change. Oh my God. Okay. Now, Therefore, okay, since हम again, मैथ्स में इतने लंबे लंबे ऐसे आंसर मैम लिखने में therefore फंस it is जाते हैं। not an वही AP. तो मैम लिटरेचर है मैम, ये तो। therefore it is not an AP से पहले एक लाइन और लिख दो कि common difference is not there or the difference is not common. Oh, okay, In ma'am. other words, the difference is not common. हाँ राइट, आंसर का इतना अच्छा डेफिनेशन वीडियो में देखना वापस जाके, कितना अच्छा पहला वाला डेफिनेशन एकदम अंदर से आया था, कितना अच्छा आया था. The difference is not common, so this is not an AP. Thank God it is over. मैम ये तो लिटरेचर And का आंसर है मैम। hence proved everyone is not good at everything. I'm not good at framing the answers for you people. Do it on your own, okay? Okay. Now, let's move on with the next part. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupee 150 for the first meter. For first meter, you have once you have dug, you will get 150 for sure. It rises by 50 for every subsequent meter. One more meter you have dug plus 50. One more meter you have dug plus 50. One more meter you have dug plus 50. So for every subsequent meter, every increase in the meter, you are adding 50 to it. Gauri, is this an AP or not? ma'am, it is. Can you frame the AP out of this, please? Ma'am, as in the statement. The mathematical term, this, this is an AP. Ma'am, I don't The understand. first term is 150. Second one, add 50 to it is 200. Next one is 250. Next one is 300. So what is this? This is Constant. a Consecutive. common difference is there between consecutive terms. Hence, this is an AP. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, just can you give us 2 minutes to write? Okay. Okay. So now next part we are discussing the amount of money in account every year when 10,000 is deposited at a compound interest 8% per annum. Percent again and compound interest कैसे charge होता है? कैसे? Like whatever you have in your bank, उसका 8% add हो गया. Now the amount that you have in your bank increased. Now 8% of that will be given to you. Wouldn't that be a different thing? है ना? Because the amount in your bank is increasing every year because of that 8% adding to it. That means the 8% of that amount will also be different every time. Right or not? Clear no? Compound interest? But then they're adding 8% like every year, right? So wouldn't it be a ये तो common 8%. अच्छा मुझे एक बात बताओ साची, आपने 1000 रुपी बैंक में रखा एंड आई एम आस्किंग यू कि इसके अंदर 10% एवरी ईयर डाल दो, बैंक में इंटरेस्ट डाल दो. सो पहले जो 10% होगा वो 100 रुपी होगा, तो 1000 प्लस 100 आपके बैंक में अब 1100 होंगे. अब फिर से इसी का 10% मिलना है आपको. दिस टाइम इसका 10% विल बी 110. The 10% also increased because of the increased amount. No, earlier you had 1000 in your bank. Now you have 110 in your 1100 in your bank. So 10% of the amount that you are having in your bank will be increasing every time, बच्चे. मैम बट उनका जो डिफरेंस होगा वो तो इक्वली होगा ना. कैसा? अभी चलो देखो 1100 के अंदर 110 ऐड करो तो दिस इज 1210. 1210 1100 से सब्ट्रैक्ट करो. What are you getting? You're getting 10 rupee extra here.
यहाँ पे 1100 से 1000 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यू वर गेटिंग 100 ओनली एज योर इंटरेस्ट। सो देखो डिफरेंस कहाँ सेम है, 10 रुपी बढ़ गया। बैंक Yes. में रखने का फायदा क्या है, बैंक मुझे जो इंटरेस्ट दे रहा है वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। जब मेरा अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो उसका 8% भी बढ़ता जा रहा है, तो मुझे ज्यादा मनी मिल रही है विथ पासिंग ईयर्स, राइट और नॉट। Yes, ma'am. समझ आ सिंपल गया। इंटरेस्ट होता था, सिंपल इंटरेस्ट होता था कि 1000 रुपी का 10% ही मिलता था आपको हर बार, तो हर बार 100 रुपी ऐड होते थे। आपका जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टूड। सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली वो एक एपी होता, लेकिन दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ही ये है कि आपका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बैंक ने आपको दे दिया, योर मनी हैज इंक्रीज्ड, नाउ व्हाट बैंक हैज गिवन यू इज आल्सो योर्स, अब उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अंडरस्टूड। लेकिन Yeah. सिंपल इंटरेस्ट में बैंक कहता है मैंने आपको दिया ना 100 रुपये, उस पे इंटरेस्ट क्यों दूं। तो सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं आता था। कंपाउंड Yes. इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, Okay. क्लियर नो। Ma'am, यस। but what is simple interest and compound interest in brief? अगेन 7th 8th में समझा था बेटू, Ma'am, ध्यान ही मैं नहीं दिया ma'am. क्लास का इतना सारा टाइम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा दूं। चलो, हमेशा 7th क्लास के बच्चों को ये टॉपिक जैसे कराते हो, एक बार क्विकली बता देती हूँ। 1000 रुपये हैं आपने बैंक में रखे हैं, बैंक 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ये केस सिंपल इंटरेस्ट का डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वही ₹1000 ही जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बैंक के पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपके 1000 रुपये पे बैंक आपको 10% देगा फॉर 1 ईयर बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR बाय 100, राइट। सॉल्व करेंगे पीटीआर क्या इसको, होता है मैम? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। ओ यस मैम। भूल गए, सब आगे बढ़ रहे हो तो पीछे का इरेज मत करो। तो 100 रुपये बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास एंड में क्या हुआ, 1000 रुपये आपके थे, 100 रुपये बैंक ने दिए। दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज द इंटरेस्ट गिवन टू यू। आपके बैंक में अब 1100 रुपये है और दोनों तरफ सेम ही काम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही हो रहा है, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का बाद में फॉर्मूला कुछ और करेंगे, लेकिन मतलब 8th में किया था, लेकिन अब भी मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। तो वो क्या है, यहाँ पे भी 100 रुपये ही दिया बैंक ने आपको, 1000 आपका प्रिंसिपल था, 100 रुपये बैंक ने दिया। अब आपके बैंक में 1100 रुपये, दोनों तरफ फर्स्ट ईयर में केस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये जो इंटरेस्ट है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक इसको साइड में करेगा, बोलेगा आपके पैसे पे इंटरेस्ट लो मुझसे सिर्फ, तो सिर्फ आप ही के पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी फिर से 100 रुपये हो गया, तो अभी 1100 में 100 रुपये और ऐड, और आपको 1200 हो गया बैंक में आपके पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, बैंक आपको कहेगा दिस इज कंप्लीट योर सर, आप ही का है, वो 100 भी जो हमने दिया अपना ही समझो। तो अब आपको जो 10% कैलकुलेट करना है वो 1100 पे कैलकुलेट करना है। तो अभी दिस इज 110 रुपये जो बैंक ने आपको दिया, तो अब ये जो 110 बैंक ने आपको दिया इसको ऐड करोगे तो 1210 हो गया। देखो 10 रुपये का बेनिफिट है। अगर सिर्फ 1000 रुपये में 10 रुपये का बेनिफिट है, सोचो अकाउंट में पापा मामा के लैक्स में होगा, कितना डिफरेंस आ रहा होगा इन दी सेकेंड ईयर, Yes, राइट और ma'am. नॉट। Yes, तो ma'am. कंपाउंड Totally. इंटरेस्ट मेक्स अ डिफरेंस देयर। अगर थर्ड ईयर कैलकुलेट करोगे, थर्ड ईयर वो फिर से 100 दे देगा और 1300 आएगा आपके पास सिर्फ। वो बोलेगा मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ उस पे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आपको आप ही के पैसे पे इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन यहाँ पर इस बार आप जो अब ये 1210 है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दोगे तो दिस इज 1 to 1। अब इसमें 1 to 1 बढ़ेगा तो 1321। देखो 21 रुपीज का बेनिफिट हो गया इन थर्ड ईयर। Okay, आपका yes, ma'am. बेनिफिट भी बढ़ता जा रहा है।
जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यही काम कर रहे हो तो एवरी टाइम इंटरेस्ट इज चेंजिंग, 100, 11 एंड 10, 121, आप डिफरेंट टर्म्स ऐड कर रहे हो। 2000 पहले आपने 100 ऐड किया, 1100 हो गया, फिर आपने 121 110 ऐड किया, है ना, तो 1210 हो गया, फिर आपने 121 ऐड किया तो 1321 हो गया। दिस इज नॉट एन आईपी क्लियरली। Exactly. Why not an AP? Because you're adding, the difference is not common, you're adding different things to it. Understood or not, bachche? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear everyone? Compound interest is never an AP. Simple interest, yes, that is an AP. आया समझ में? आगे चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नेवर एन एपी बिकॉज 8% ऑफ द प्रिंसिपल would change every time because your principal is also changing. अभी मुझसे दोबारा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? ओके, चले आगे। क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। अभी क्वेश्चन 2 बताने से पहले एक बार जरा एपी की टर्म से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं थोड़ा सा। अभी तक एपी क्या है पता चला। अभी मैं अगर एक एपी बना रही हूँ 1000, 1100, 1200, 1300, so on. Sorry. So first term को you will call as A और A1. A भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं, right? Second term को you will call as A2. थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है उसे आप A3 कहेंगे। फोर्थ पोजीशन पे जो टर्म है उसे आप A4 कहेंगे। ऐसे ही करते करते nth पोजीशन पे जो टर्म होगी आप उसे an कहेंगे। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन n is 1, second position n is 2, third position n is 3, number of term, that is the position. Position of term is represented by n. किस पोजीशन पे है वो टर्म, दैट इज n। उस टर्म को उसकी पोजीशन के साथ लिखा जाता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, A200, AN। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियरली? Ma'am, ओके। ये n क्या था मैम? nth पोजीशन पे हो सकता है ये 100 हो पोजीशन, 100th पोजीशन पे जो टर्म है दैट इज A100। No, no, n ma'am. I'm n talking can be about the any natural number, n can be any natural number. So n is the natural number, it is actually the position. N is what? It is the position of the term. ma'am. What term, ma'am? That can be found when you know the value of n, no beta. अगर आपको n पता है, n ये 200th पोजीशन है, तो आप A200 फाइंड कर पाओगे, उस पे अभी फॉर्मूलाज में बात करेंगे। ओके, अभी के लिए क्या समझना है कि n क्या है, पोजीशन है। जैसे कार्डिनल नंबर सीखे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ अच्छा, टर्म yes, इज ma'am. A4। अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? Yes, Clear? ma'am. Okay, now the difference between the consecutive term is represented as D, which is also known as common difference. So every AP has got the first term, then there is some common difference going on there. Understood or not, bachche? Clear or not? If I tell you that 3000 is a term here in this AP, 3000. What is 3000? Is it AN or is it N? Ma'am, n. I have told you that 3000 is one term in this AP. It is not the position of the term. I have not told you at what position is 3000 coming. 3000
is the term here. So term, I have written it in this line. These are all the AN. terms. So that is AN actually given to you, 3000. That is the term. Number of term is n. The position of the term is n. That I have not told you here. Understood or not, bache? If, for example, I am telling you that 1500 is the sixth term in this AP, what is 1500 bacha log and what is 6? Tell me. Ma'am, 6 is N and 1500 is AN. Very good. Very nice. The position is n always. The term at that position is an always. Clear everyone or not? Okay. Now let's get started with question number 2. Question number here 2 here tells you write first two terms of this AP when you know the first term is A and the common difference D is there. So let's make this AP there. Tanish, you make it for me, beta. Can you write first four terms of this AP? I'm done, ma'am. Yes, ma'am. Tanish, tell me. Ma'am, 10, 20, 30, 40, And so on. 50. Yes, But ma'am. they've only asked for first four terms. Very simple or not, everyone? Clear, no? Okay. Next one. Next one. This third one. Sachi Gupta. You're solving this for me. All ears to her. Yes, beta. Unmute. वैसे ही तेरी आवाज नहीं आती बच्चे. Go ahead. A little. But ठीक है. Go on. Now you are not at all audible. बोलना सांची. मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. सांची अभी कूलर के सामने बैठी है ना. उसको बंद कर दे एक बार प्लीज. मैम मेरे लैपटॉप के फैन की ज्यादा आवाज आ रही है मैम उससे. मैम मैं लैपटॉप को सुनने जा रहा चलो हूँ, फैन सुनाई दे रहा है. जब तक वो गई है कूलर बंद करने तब तक मुझे अर्नब बताएगा. अर्नब बता दे जल्दी से. Ma'am, 4, 1, -2 and -5. Is this correct everyone or not? देखो difference is negative. Whenever you have negative difference, the AP is in decreasing order. The AP is decreasing, right or not? AP हमेशा decrease हो रहा होगा when you have negative common difference. Understood or not, बच्चे? Sachi Gupta. Now tell me for the fourth part. Sachi, I'm waiting. She's frozen. Okay. So, Gauri, you do it for me. मैम नहीं आ रहा है ये वाला. हाफ हाफ का डिफरेंस डालना है. नंबर लाइन पे सोच ले, इजी हो जाएगा. मैम सो लाइक पॉइंट में नंबर ला सकते हैं. इसको 0.5 सोच ले, नहीं तो मैथमेटिकली मत सोच, वैसा ही हाफ सोच. नंबर लाइन पे सोच. -1 पे है अभी तो, और पॉजिटिव है मतलब ऐड होना है, मतलब राइट को जाना है नंबर लाइन पे, और हाफ हाफ स्टेप आगे आ रही है. क्या बनेगा एपी बोल? मैम -1 -1.5. -0.5 हाँ. है ना, ये 0 है ना. यस मैम, यस मैम. हम्म. या मैम फिर इसे माइनस हाफ भी लिख सकते हैं. ओके मैम देन 1
1 पे आ गई, मैम 0 पे आ गई, आगे चल, कोई बात नहीं, चल। हाँ फिर मैम 0.5 and so on 1. राइट, इसे मैथमेटिकली करें। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसे? चलो सब लोग लिखो। So I'll write A1 to be -1, that is the first term. For A2, I will write -1 plus half. That is finding the second term of the AP. So this will be -1 plus half. आप LCM ले लो 2, right or not? LCM लेंगे 2 का और उसके बाद क्रॉस करेंगे -2 plus 1. So that is -1/2. राइट बच्चे? तो इसको -1/2 भी बोल सकते हैं ना, जिसको डेसिमल में बोलना है। -0.5 भी इसे बोल सकते हैं, है ना? और क्या करें? अब भी A3 निकालना है। A3 के लिए अब जो ये टर्म आया -1/2, इसके अंदर फिर से हाफ ऐड कर दो। सो देखो -1/2 + 1/2 0 हो गया। नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। A4 निकालने के लिए 0 + 1/2, 0 + 1/2 तो हाफ ही हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म, तो दीज आर 4 टर्म्स ऑफ द AP। -1, -1/2, -0, ½ अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? यस मैत्री बेटा। मैम ये पूरा एडिशन करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नेसेसरी है क्या कि लाइक मेंटली करके लिख सकते हैं? इनिशियली करना जरूरी है। A2, A3, A4 फाइंड करके दिखाना जरूरी है। ओके मैम। क्लियर बच्चे और नॉट? मैम मैंने डायरेक्टली लिख दिया सारा। नहीं नहीं, शो करना है। A1, A2, A3, A4 शो करना है। ओके चलें, नेक्स्ट पार्ट कौन सॉल्व करवा रहा है? मुझे जल्दी से मैम पूर्वी। मैम पूर्वी, पूर्वी। Yes, ma'am. So, ma'am, the first one is -1.25, ओके then -1.5, अच्छा, मुझे सॉल्व नहीं करवा रही, डायरेक्टली आंसर बता रही है। ma'am, मैंने solve कर लिया, solve ओके करके. ओके Then A3 is -1.75 and A4 is -2. एक बार देखे कैसे किया ये पूर्वी ने। देखे, आपको कॉमन डिफरेंस नेगेटिव गिवन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है ना AP? पता है ना सबको ये बात? माइनस अगर 0 ये है, -1.25 ये है, तो इधर 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 -1.5 इधर होगा, -2 इस साइड होगा, लेफ्ट की साइड पे होगा, है ना? सबको ये माइंड में क्लियर है ना पिक्चर? तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर मैथमेटिकली करना है तो दैट इज -1.25, अब -1 -0.25 प्लस डी होता है, तो यहाँ पे वो प्लस डी नेगेटिव डी हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना? सो दिस विल बी -1.5। अभी -1.5 जो पिछला टर्म है उसके अंदर से फिर से 0.25 डिक्रीज कर दो, तो -1.75। अब -1.75 से फिर से डिक्रीज कर दो 0.25, दैट इज -2.0। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? क्लियर बच्चे और नॉट? Yes, शुड आई ma'am. मूव ऑन? ओके अभी दिस क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग। साची बेटा कूलर चला ले, अब तेरी आवाज आती नहीं है, माइक ऑन करेगी तो फ्रीज हो जाएगी। तो तू पढ़ ही ले आराम से बैठ के, तो कूलर चला ले। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दिस इज द AP गिवन टू यू। फर्स्ट टर्म हियर इज 3, ऑफ कोर्स द फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू एवरी टाइम, है ना? वो तो सिंपली सामने ही लिखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एज वेल। कैसे फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस? फॉर कॉमन डिफरेंस एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड।
है ना? Every consecutive term you need to subtract from the previous one. So for difference you will check A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3. Let's check it. From A2 minus A1 is 1 minus 3, which is minus 2. For A3 minus A2, A3 minus A2 is minus 1 minus 1. This is minus 1 the term, subtracting 1 the previous term from it. Right or not, bache? So what is this now? -2. Minus 2. Again, A4 minus A3 is minus 3 the term, subtracting the previous term minus 1 from it. Right or not? Now how to do this? Minus 3 plus 1. So what is the answer? Still minus 2. Since the common difference is the same, this is AP, but they have not asked you to verify that if that is AP or not. They've only asked you to find out the first term and common difference. So that is A1 is 3 and D is minus 2. Understood or not, bache? Ma'am, can we write this directly? No. Okay. Spend some time with it. Okay, everyone. Fourth one pe try karo. I am pause recording. Let's see if you people can do this. Right. So everyone is feeling good with it. मैंने ये part discuss कर लिया, ये कर लिया. Rest two, these two are your homework. Okay. Now moving to question number 4. Which of the following are APs? APs को justify करने के लिए you have to find the difference हमें voice of break all है. the subsequent differences are the same, then that is an AP. Understood or not, everyone? So here I am checking A2 minus A1, which is 4 minus 2, that is 2. A3 minus A2, I am checking, that is 8 minus 4, that is 4. Then A4 minus A3 is 16 minus 8, that is 8. Since difference is not same or common, hence it is not an AP. Understood everyone or not? Acha, since I cannot give you homework today, no, as I committed, that homework you will get from this only. So take your time, complete this third question and fourth question. That's it. We are not moving ahead today. Right? So complete it.